Assalamualaikum students, welcome to the final stretch of Unit 5 Reaction Kinetics from class 10 Chemistry. In this session, we will tackle long question number 10 and 11 along with the think tank questions that test not only your knowledge but also your ability to apply concepts logically. We will break down each question step by step and explain the reasoning behind every answer in a way that's easy to understand. Let's finish this unit strong. Let's begin. Question number 10 is compare and contrast the effects of temperature and concentration on the rate of reaction. हमने बेसिकली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन देखना, हमने इनको कंपेयर भी करना है. ठीक है. टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. When temperature increases, the kinetic energy of the reacting particles also increases. जब भी temperature increase करता है, kinetic energy of the particles increase होती है. A greater proportion of particles gain energy equal to or greater than the activation energy. पार्टिकल्स ज़्यादातर पार्टिकल्स इनफ एनर्जी हासिल कर लेते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ग्रेटर होते हैं, तो वो इजीली उसको ओवरकम कर लेते हैं और केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं. दिस रिजल्ट्स इन मोर फ्रीक्वेंट एंड मोर एनर्जेटिक कोलिजन्स व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. इसकी वजह से ज़्यादा फ्रीक्वेंट और ज़्यादा एनर्जेटिक कोलिजन्स होती हैं और नंबर ऑफ कोलिजन्स भी ज़्यादा होती है और उनमें एनर्जी भी ज़्यादा होती है, which increases the rate of reaction. According to the Maxwell-Boltzmann distribution curve, increasing temperature flattens and shifts the curve to the right, increasing the area under the curve beyond the activation energy threshold. Effect of concentration. Concentration refers to the amount of reactant particles in a given volume. A specific volume and number of particles के amount. ठीक है. When concentration increases, there are more reactant particles per unit volume. This leads to more frequent collisions between the reactant particles. जब particles per unit volume होंगे ज़्यादा तो ज़्यादा successful collision होंगी और ultimately the reaction rate will be increases. अब इनका comparison दोनों का क्या है? Factor 1. Effect on kinetic energy. Temperature increases kinetic energy. Concentration, it doesn't increases the kinetic energy. ये just collisions को increase करता है. Okay, collision increases frequency and energy of the collision. Collisions पे टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है कि नंबर ऑफ collisions भी इंक्रीज करता है और collisions की एनर्जी भी इंक्रीज करता है, जबकि टेम्परेचर ओनली इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ collisions को इंक्रीज करता है. एक्टिवेशन एनर्जी, मोर पार्टिकल्स ओवरकम इट. ठीक है. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पार्टिकल्स की collisions होंगी मैक्सिमम collision की और वो उसको एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम कर लेंगी. कंसंट्रेशन के केस में नो चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी. रिएक्शन रेट इंक्रीजेस रैपिडली. ठीक है. और कंसंट्रेशन इंक्रीजेस स्टेडली, लीनियर इफेक्ट. ठीक है. और डिस्ट्रीब्यूशन का अफेक्ट शेप एंड पोजीशन, कर्व की शेप को भी और पोजीशन को भी अफेक्ट करता है. कंसंट्रेशन नो अफेक्ट ऑन शेप ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन. Question number 11. Discuss the significance of activation energy in chemical reaction and its relationship to the to reaction rate. Activation energy is the minimum energy that reacting particles must possess to undergo a successful chemical reaction. It acts as threshold barrier. Only particles with energy equal to or greater than this can react with when they collide. Significance of activation energy. Controls the rate of reaction. Reaction with lower activation energy occur fast because many particles have enough energy to react. Reaction with high activation energy are slower since fewer particles can overcome the energy barrier. अगर एक्टिवेशन एनर्जी the minimum amount of energy on which particles can react वो क्या होगी, लो होगी, तो ज्यादातर पार्टिकल्स विद लो एनर्जी वो इजीली रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे. अगर हाई एक्टिवेशन एनर्जी की बहुत कम पार्टिकल्स होंगे वो जिनके पास उतनी एनर्जी होगी जो उसको ओवरकम कर सके, सो रिएक्शन रेट विल बी स्लो. Determine effective collisions. Not all collisions led to reactions. Only effective collisions where particles have sufficient energy and proper orientation result in product formation. Effective collisions वो ये एक तो energy sufficient energy भी हो, activation energy से equal या उससे ज़्यादा. दूसरा
राइट रिएक्टेंट के साथ ओरिएंटेड हो, उसी के साथ ही कोलाइड करें. Okay, influenced by temperature. An increase in temperature rises the kinetic energy of the particles. More particles gain enough energy to overcome the activation energy, thus increasing the reaction rate. Lowered by catalyst. Catalysts provide an alternative pathway with lower activation energy. This allows more particles to successfully react, speeding up the reaction without being consumed. Okay, relationship to reaction rates. The lower the activation energy, the faster the reaction rate. The higher the activation energy, the slower the reaction rate, because fewer particles have the required energy to react. This relationship is expressed mathematically in Arrhenius equation, which shows how rate increases as activation energy decreases. Conclusion: activation energy is crucial in determining whether a reaction occurs or how fast it proceeds. Understanding it helps in controlling and optimizing chemical reactions in industries, laboratories, and biological systems. Think tank section. Question number 1 is analyze a scenario where a catalyst is not effective in increasing the rate of reaction. हमने अभी तक पढ़ा कि कैटलिस्ट इंक्रीज करता है एक रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को. कोई ऐसा सिनेरियो जिसमें ये इंक्रीज नहीं करता. यस, इट इज पॉसिबल व्हेन इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन. जो सबस्ट्रेट होता है ना बच्चों, एंजाइम होता है ना, वो स्पेसिफिक टू रिएक्टेंट्स होता है. हर एक ही कैटलिस्ट सब रिएक्टेंट्स के साथ सुटेबल नहीं होता. ये नहीं कि बस एक ही कैटलिस्ट उठा के हर रिएक्शन में. नो, for every reactant catalyst is very specific. अगर कोई भी और कैटलिस्ट उस रिएक्टेंट के साथ रखा भी रहे बट वो रिएक्ट नहीं करेगा उसके साथ, उसमें फिट इन होता है जिसको लॉक एंड की मॉडल कहते हैं, ठीक है, वो उसके साथ फिट इन नहीं हो पाता, वो उसके साथ बॉन्ड ही नहीं बना, कम्प्लेक्स नहीं बना पाता. The temperature or pressure is not ideal for the catalyst to work. टेम्परेचर और प्रेशर आइडियल ही नहीं होता, कंडीशंस सुटेबल नहीं होती कि जिस पे वो कैटलिस्ट काम करे. इफ द कैटलिस्ट डज नॉट कम इन कांटेक्ट विद द रिएक्टेंट्स, इट कैन नॉट हेल्प द रिएक्शन. रिएक्टेंट के साथ कांटेक्ट में ना हो, किसी और पोर्शन में रखा रहे, ठीक है, कैटलिस्ट उस कांटेक्ट में लाना पड़ेगा रिएक्टेंट्स के साथ. इफ अनवांटेड सब्सटेंसेस लाइक इम्प्योरिटीज स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, अगर कोई अनवांटेड सब्सटेंसेस जिसको हम इम्प्योरिटीज कहते हैं जो उधर रिक्वायर्ड ना हो, स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, तो वो उसको रिएक्टेंट को उसके साथ बाइंड ही नहीं होने देंगे, ठीक है, इट बिकम्स इनएक्टिव. ओवर टाइम कैटलिस्ट कैन लूज देयर एक्टिविटी ड्यू टू रिपीटेड यूज और डैमेज. क्योंकि कैटलिस्ट के बारे में हमने पढ़ा है कि खुद रिएक्शन में यूज नहीं होते, प्रोडक्ट के साथ जाके वापस डिटैच होते हैं और अगेन सेम रिएक्शन रिपीट करते रहते हैं. तो जब इतने मैक्सिमम टाइम यूज होने के बाद मैक्सिमम रिपीटेड यूज या किसी डैमेज की वजह से वो अपनी एक्टिविटी ही लूज कर देते हैं. फॉर अ कैटलिस्ट टू वर्क इट मस्ट बी सुटेबल फॉर रिएक्शन एंड यूज अंडर राइट कंडीशंस. क्वेश्चन नंबर 2, evaluate the role of chemical kinetics in optimizing food production processes in the food industry. Chemical kinetics helps the food industry in the following ways. Faster reactions. केमिकल काइनेटिक्स के प्रिंसिपल को समझते हम फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं. बाय अंडरस्टैंडिंग रिएक्शन रेट्स, इंडस्ट्री कैन स्पीड अप फूड प्रोसेसिंग. हम ये जो रिएक्शन रेट्स हैं इनको समझ के हम फर्मेंटेशन और बेकिंग इंडस्ट्री में इस नॉलेज को यूज करते हुए स्पीड अप कर सकते हैं फूड प्रोसेसिंग. बेटर टेम्परेचर कंट्रोल. नोइंग हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स रिएक्शंस हेल्प मेंटेन क्वालिटी ड्यूरिंग कुकिंग एंड स्टोरेज. टेम्परेचर कंट्रोल को समझते हुए हम कुकिंग और स्टोरेज में अपनी फूड को वेस्ट होने से बचा सकते हैं. एफिशिएंट यूज ऑफ कैटलिस्ट. Enzymes, natural catalysts are used to speed up food production without affecting taste or safety. Less waste. By optimizing reaction conditions, industries reduce raw material wastage and save money. Safe products. Controlling reaction rates ensures harmful reactions like spoilage or overprocessing don't happen. Conclusion. Chemical kinetics make food production faster, safer, and more effective by controlling how fast chemical changes happen. Question number 3. Predict the effect of doubling the surface area of a solid reactant on the rate of reaction, providing reasoning based on the collision theory. कि सरफेस एरिया को डबल करें तो उसके रिएक्शन रेट पे क्या फर्क पड़ता है.
when a surface area of solid reactant is doubled, उसको हम grind करके powder बना लें, the rate of reaction increases. According to collision theory, more surface area means more particles are exposed for the collision. This led to a high number of effective collisions per second between the reactant particles. As a result, the reaction happens faster. Example: a crushed tablet reacts faster in water than whole tablet because more of its surface touches the water. जब एक tablet को वाटर में मिक्स करना होता है, हम अगर उसको पाउडर करके मिक्स करेंगे वो जल्दी मिक्स हो जाएगी. अगर हम उस टेबलेट को पूरे टेबलेट को उसमें डालेंगे तो वो टाइम लेगी. क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया लेस एक्सपोज होगा. Question number 4 is explain why the formation of gas is often associated with an increase in the rate of reaction. हम जब किसी केमिकल रिएक्शन से गैस निकलती देखते हैं तो हम कैसे रिलेट करते हैं कि इसमें रिएक्शन रेट इंक्रीज है. Gas formation is often linked to the faster reaction rates due to visible bubbling indicate rapid product formation. जब केमिकल रिएक्शन से बबल्स निकल रहे हो तो ये इमेजिन किया जाता है, अज्यूम किया जाता है कि केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है. Gas particles escaping from reaction mixture can reduce backward reactions, pushing the reaction forward. जब गैस पार्टिकल escape हो जाते हैं उसमें कुछ क्या कहते हैं रिएक्टेंट्स भी प्रोडक्ट की फॉर्म में escape हो जाते हैं. अब वो प्रोडक्ट इक्वल नहीं रहती कि वो रिवर्स में वापस सेम रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस कर सके. तो वन साइडेड रिएक्शन हो जाता है और उसके वो रिएक्शन रेट इंक्रीज हो जाता है. इन सम केसेस गैस एवोल्यूशन इंक्रीजेस सरफेस मिक्सिंग और एजिएशन, हेल्पिंग मोर रिएक्टेंट्स कोलाइड इफेक्टिवली. एडिशनल रिएक्शंस दैट रिलीज गैस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, often proceed quickly due to their exothermic nature, which provides more energy for future collisions, further speeding up the reaction. So you have now just completed the final set of questions from unit 5, including some of the most thought-provoking think tank exercises. These questions help you go beyond learning and really understand how reaction kinetics works in daily life and exam scenario. Keep revising and don't forget to like, comment, share and subscribe for more educational content. Until next time, keep learning and best of luck in your studies. Allah Hafiz.